Hi, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning. Very good Good morning. morning, everyone. Happy Good day morning, today. Good morning. Very good morning. Good morning, ma'am. Very good morning. So our today's chapter is Cue the Magic. मुझे बड़ा मजा आता है. This is the chapter where we are playing a game all day long. And by the way, let me just start with an experience that last month we had done the magic check practice. So yesterday when we were talking about magic check, like in Dr. Joseph Murphy's book, it was in a very different context. But last time I had filled the magic check, तो मेरा वो पूरा नहीं हुआ था. मतलब I did not get that money. फिर इसके बाद इस बार और this time when I filled it, I was in Singapore and I didn't have the magic check with me. So I came back. So 2 practices I could not do there in Singapore. I was doing lots of practices, writing my, daily 60, 70 blessings and all of that. But check I filled only when I came back to India because वहाँ पे मेरे पास check, मैं तो अपने normal checkbook में ही भरती हूँ जो whatever like HSBC का या HDFC का, तो उसी checkbook में I fill normally अपना magic check. और मेरे दोनों magic check कल realize हो गए. So this is how magical it is. So sometimes we give up, right? Like कभी हमको लगता है कि last time वाला नहीं रियलाइज हुआ है, मतलब और मैं नया भर रही हूँ, तो नया तो मैं हर महीने भर देती हूँ चाहे मेरे पिछले 2 रियलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, दैट्स इमटेरियल, बट दैट ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स हैज टू बी देयर. So that's very important, that belief, because it is ask, believe, receive. So unless that believe wala thing is not there in us, receive does not happen. So when you really kind of surrender to the universe that, yes, I have filled in the check and, whatever it is, and that you're going to, receive it for sure, it definitely comes. कभी कभी होता है ना, क्या मैंने तो 2-3 भरे, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं. That is when you're not trusting, the universe doesn't want to yield. Okay, so when you don't want to trust someone, so why will that person do anything for you? Obviously, मतलब हमें एक दूसरे के साथ भी होगा. अगर आप मुझको आके बोलो that I don't trust you, so why will I do anything? जब आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे कि मैं कर सकती हूँ, तो मेरा करने का मन भी नहीं करेगा ना. तो वही जो एनर्जी होती है, अगर वीक एनर्जी होती है तो प्रेयर्स आंसर नहीं होती है. तो वीक एनर्जी से मेरा मतलब है जब डाउट होता है या वरी होता है, तो प्रेयर्स बहुत आराम से आंसर नहीं होती हैं. बट मेरे तो दोनों ही एक सिंगल शॉट में रियलाइज हो गए. क्वाइट अ फ्यू लैक्स, मतलब इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि अब मैं छोटे अमाउंट नहीं भरती, क्योंकि इतने सालों से भर रही हूँ तो मुझे पता है कि फटाफट आ जाता है जितना भी बोलो. So that is the beauty of these practices, and this is what, so I thought I'll share with my own experience. And आज वाला जो chapter है, that's also magic, मतलब cue the magic. It's a game जो आज पूरे दिन खेलना पड़ेगा. बहुत लाइट हार्टेडनेस, एक फेदर लाइक बच्चों जैसे ये करना होता है. तो इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, क्यू मतलब संकेत, तो इसको हिंदी में चैप्टर को बोलते हैं हम जादुई संकेत. इसका मतलब है कि कोई चीज आपके दरवाजे पे आके खड़ी हुई है या रखी हुई है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा है जब तक आप थैंक यू ना बोलो. जैसे ही आप थैंक यू बोल देते हो, वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है. आपको एफर्टलेसली वो दरवाजा खुल जाएगा और सामने आपके जो डिजायर, ड्रीम या जो भी था वो सामने रखा हुआ आपको नजर आ जाएगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इस वाले चैप्टर का. सो ये असाइनमेंट इज लाइक क्यू द मैजिक. सारी वो चीजें जो आपके लाइफ के अंदर आने से 2% रुकी हुई हैं, क्योंकि आपको उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, तभी वो दरवाजा खुलेगा, तभी वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी. तो दिस इज व्हाट दिस प्रैक्टिस. जैसे अगर किसी आपको पूरे दिन चीजें दिखती रहेंगी अपने आप, ठीक है, सो हमको माइंडफुल रह के अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी होता है. नहीं तो हम लॉस्ट केसेस होते हैं. आधे टाइम हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, सामने कुछ और हो रहा होता है.
है ना, मतलब हमको दिखते भी नहीं है। कई बार हम वॉक करके चले जाते हैं, हमें कोई नेबर या कोई फ्रेंड हमको दिखती भी है, वो बोलती मैंने तुमको देखा था बट तुमने मुझे एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो इस तरह से होता रहता है, यू नो। सो जैसे हो सकता है कि ब्यूटीफुल सनसेट्स तो शुरू से हो रहे हों, लेकिन उनको नोटिस तो अब हम करते हैं और बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं दैट वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। You know, forever I have been driving on the D&D road and coming to my house. पता नहीं बहुत सालों से मेरा ऑफिस है जो यहाँ पे, मतलब of course I'm with my current organization for the last 10 years. So उसमें when every day I drive back home, okay, but now it takes my breath away to see, because कभी कभी जब मैं 6-6:30 बजे निकल जाती हूँ तो I see a very beautiful sunset, because sunset's happening at 7 o'clock these days in Delhi. So I see a very beautiful sunset. I was not noticing that earlier. So yesterday when I was driving back और मैंने जब ये देखा कि wow beautiful sunset, I thank you sun for and thank you universe for giving me this stunning view. बहुत अच्छे से क्लाउड्स के बीच में वो सनसेट हो रहा था, और उस रोड पे मैं बहुत टाइम से ड्राइव करती हूँ, लेकिन माइंडफुल नहीं होती ना, मेरी नजर जाती नहीं है वहां पे, पहले नहीं जाती थी, अब हर बार जाती है। हर बार when मतलब I celebrate sunrise and sunset. You know, like when I go to certain places on holidays, so I celebrate sunset with a drink, maybe a margarita or a cosmopolitan or something, like literally, matlab literally celebratory moments hote hain. So that is saying thank you to the universe, because sun is of course equal to universe itself, right? So आज का यही है that mindful रहो of these little things that you have in your life, and बहुत सारी चीजें सुबह से रात तक आज सामने आएंगी। हमको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और उन चीजों से जो जो हमको नजर आएंगी उनके बारे में कुछ न कुछ डिराइव करके आपको थैंक यू, जैसे अगर आपको एम्बुलेंस दिखी, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड थैंक यू फॉर ग्रेट हेल्थ ऑफ एवरीबडी इन माय सिटी, माय कंट्री। ओके, फिर उसके बाद आपको कुछ और दिखा, आपको लग्जरी कार दिखी, और जो आपकी ड्रीम कार है, या जो भी अगर आपको होंडा सिटी दिखी और होंडा सिटी आपको खरीदने का बहुत मन है, ठीक है, तो थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार, इस तरह से बोलना है। और वो एक ही चीज के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं किसी के, यू नो, लाइक अगर सनफ्लावर दिखा आपको, सपोज सनफ्लावर दिखा, thank you for the beautiful sun, you know, which is giving such a radiancy to this flower. So आप एक जने के लिए वही सनफ्लावर है, सबके लिए अलग अलग मतलब होगा। वो बोलेगा थैंक यू, दूसरा पर्सन बोलेगा ओ थैंक यू टू ऑल द येलो कलर ड्रेसेस दैट आई हैव इन माय वार्डरोब। द थर्ड पर्सन विल से थैंक यू टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। देन चौथा पर्सन बोलेगा thank you for multiple colors, you know, in my life. I have so many colors in my life. So it's a connotation of color then. So every person is seeing that in a different way, isn't it? So that way, और जो आपको आपकी लाइफ की चीज है वही आपको नजर आएगी, और वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो इसलिए आज पूरे दिन चीजों को देख देख के थैंक यू बोलना है। आपको एटीएम नजर आया, थैंक यू। सो इस तरह से आज का ये गेम होता है। यूनिवर्स आपके नजरें लेके जाएंगे इधर उधर हर जगह, और वो देख के आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। जैसे अगर किसी कोई अनहेल्दी आपको दिखाए तो हमको बोलना है थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, व्हाइल एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो ब्लेस दैट पर्सन। सो जादुई संकेत वाला बहुत मजेदार चैप्टर होता है, बहुत अच्छा असाइनमेंट। इज अ गेम दैट वी प्ले विद द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स सारी वो चीजें जो आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, जस्ट अबाउट आने वाली हैं, एक बार दिल से थैंक यू बोल दो उस चीज के लिए, और वो एकदम से आ जाएगी और छप्पर फाड़ के आएगी, ठीक है। तो वो संकेत यूनिवर्स से इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमको उसको थैंक यू बोलने की जरूरत है। तो ये वाली जो इमेज है, इसमें वो डायरेक्टर की चेयर है जिसमें कट कैमरा एक्शन जो ये होता है, ठीक है, और उसमें उस वाली चेयर पे आप बैठे हुए हो, और उस पे वो क्लैप होता है ना, जो क्लैप करके एक्शन बोलते हैं। तो आपको अपना वाला इमेज आज ढूंढनी है, ठीक है। और वो सुबह से ही शुरू हो जाना। रोंडा बर्न तो इजी, हमारे लिए सब कुछ इजी कर देती है कि बस इसमें भी उन्होंने लिखा है कि 7 ढूंढ लेना बस अपने ब्लेसिंग्स, बट 7 क्यों, हम 700 ढूंढेंगे, है ना। मतलब जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा, मतलब उसमें लिखा हुआ है ना, यू कैन नेवर डू टू मच ऑफ इट, दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड की आप कभी अति नहीं कर सकते, जितना करें वो उतना ही कम है। तो इसलिए हम पूरे दिन को सोक कर देंगे आज बहुत सारे जादुई संकेत, मैजिक क्यूज ढूंढने के लिए। So let's read. It's a beautiful chapter. Can I read one today? हाँ please पढ़िए। Hi. Good morning, ma'am. Thank you. Day 25. Cue the magic.
Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Koloa, B. 1954, writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life, because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee, or you have to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your Or you wave to them. आप दोबारा पढ़ो. Or you wave to them. okay, or you wave to them across the street. It's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. 1 second, Priya. So इसमें the first जो Flora Kolao का quote है, that life is a game and we have all, come to this world to actually enjoy and create the life like a game. So life is playfulness. ये हमने power book में भी पढ़ा था, है ना? That the key of gratitude, key of love, and key of play. So ये play is something that we live life a little too seriously. Actually हम लोग बहुत ज्यादा seriously जीते हैं और बहुत दुखी होते हैं कभी कभी बिना बात के, लेकिन थोड़ा सा हमको feather like life lead करनी है. अपनी मस्ती में रहो, चीजें आती जाएंगी. वेव्स कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं, कभी डिसॉल्व हो जाती हैं, कभी ब्रेक हो जाती हैं, फिर बनती हैं.
है ना। तो उसी तरीके से लाइफ होती है। सो नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ भी आपकी जिंदगी में अगर अभी चल रहा है ना, एवरीथिंग इज कमिंग टू पास, नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी लिव अ लाइफ टू सीरियसली एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, बिकॉज उससे हमारे सारे इमोशंस ड्रॉप डाउन होते हैं और उसकी वजह से हमें रियलिटी जो हमको मिलती है दैट बिकम्स बैड, है ना। So life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. राइट। सो हमको मैजिक के लिए, तो मैजिक इनविजिबल रेल्म से आता है, उसके लिए प्लेफुलनेस चाहिए होती है। आज हम पूरे दिन ही गेम ही खेलेंगे, आज गेम खेलेंगे जैसे लुका छिपी होती है ना, हाइड एंड सीक, उस तरह से। वैसे नहीं, वो भी एक गेम होता है, बट इसमें जो चीज हमारी आंखों के सामने आएगी हमको उसके लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। और फन है, मतलब इसमें रोंडा बर्न भी बोलती है दिस इज माय फेवरेट प्रैक्टिस बिकॉज इट्स अ गेम जो हम यूनिवर्स के साथ खेलते हैं और इसमें मजा बहुत आता है। So it is like, जैसे कहते हैं कि universe doesn't have a body figure and a mouth to come and talk to you that, oh, I'm universe and I really want to give you like 5 lakh of rupees today, but at least say thank you for the money. You know, it cannot tell you that. So it will take you to a place जहाँ पे कोई पैसे count कर रहा होगा, जहाँ पे ATM होगा, जहां आपको 2-3 बार बैंक नजर आ जाएगा और आपकी नजरें वहां पे जाएंगी उस बैंक की तरफ। दैट मीन्स thank you for the money, thank you for all the money that I have, thank you for the all money that I'm constantly receiving, thank you for my abundance, thank you for all the money I've had in my life, है ना। अब वो मनी से रिलेटेड सारी चीजें आपको दिख रही हैं। कभी कभी आप एक कार के बारे में सोचते हो, आपको वो कार अपनी कार के आगे नजर आ जाएगी, ठीक है। और वो आपने सोचा था कि काश मेरे पास ये कार हो, तो थैंक यू फॉर माई ड्रीम कार। सो आप ये बोलोगे एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू यू। वो डिलीवर करना यूनिवर्स का काम होता है, आपको बस थैंक यू बोलना है उसके लिए। उसके बाद आप थोड़ा और आगे जाओगे, आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है, okay, so thank you to the abundance, it is the sign of abundance. Thank you to the prosperity, so many people going to work in the morning, isn't it such a prosperous and rich country, so many people have got work. Or you can say thank you to so many vehicles on the road, thank you to the people. कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, कल वाला ही था ना, जिसमें था कि when you no magical air that you breathe में, that you have to say thank you for humanity and all the people around you, you know, like it's very important. So thank you to so many people around us. Then you can actually, you know, and thank you for the economy that we have, you know, like our economy is like really good, you know, so many people are employed, so many people are, you know, kind of, they have amazing businesses going on, you know, in India. And the economy is, you know, slowly getting, I mean, like India is a threat to the superpower countries also because of so many youth it has, and it has super talent, right? So that then in any way, like कोई अच्छा सा आपको सुंदर सा घर नजर आया and it is, you are in a phase of buying a house for yourself or renovating a house, thank you for my perfect dream home. तो इस तरह चीजें आती जाएंगी आपकी आंखों के सामने और आपको नॉन स्टॉप उसके लिए थैंक यू बोलना है। और आपकी नजरें कभी भी गलत नहीं जा सकती। अगर आपकी नजर किसी चीज की तरफ गई है, दैट्स मेंट फॉर यू, ओके। सो ये गेम बहुत पूरे दिन करते रहे, इसमें तो हमको बहुत थोड़े से करने को बोले। सो इसमें यही लिखा हुआ है ना, बिकॉज द यूनिवर्स कैन नॉट जस्ट वॉक अप टू यू एंड टेल दैट ये है, पहले थैंक यू बोलो फिर मैं आपको ये देता हूँ, पहले थैंक यू बोलो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं। यूनिवर्स यूजेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सारी चीजें लेके आएंगे आपके आंखों के सामने, जो आपको मतलब जो आपकी जिंदगी में आने वाली है। लेकिन बस तरीका यही है, पहले उसके लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बचपन में बोलते थे ना बच्चों को, पहले थैंक यू बोलो फिर मैं ये चॉकलेट देती हूँ, या से थैंक यू देन आई विल गिव यू द आइसक्रीम, okay. So this is how it is. So it says that it will give you signs and cues today to help you receive your dreams. तो आप इतना सैचुरेट कर दो थैंक यू कि यूनिवर्स के पास ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा हमको वो चीज अपने मतलब हमको डिलीवर करने के लिए। सो दैट्स अबाउट इट। जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर आपको एम्बुलेंस का सायरन आवाज आती है तो बी ग्रेटफुल फॉर परफेक्ट हेल्थ, से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। अगर आपको पुलिस कार नजर आती है, योर मैजिक क्यू इज टू बी ग्रेटफुल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। Then if you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for the great news. If you want to change the weight of your body, अगर आप किसी को बहुत कोई बहुत you know like अच्छी फिगर वाली कोई लड़की है या कोई बंदा है जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है और उसको देख के
say thank you for my perfect body weight. And it's your magic cue from the universe. So if you want a romantic partner, अगर आप किसी कपल को देखते हो बड़े लवी डवी से हाथ पकड़ के चल रहे हैं, so you know, you can see them, they are madly in love with each other. It's your magic cue to be grateful for the perfect partner. हम क्या करते हैं, हम jealousy करते हैं, यार मेरे पास तो है नहीं, काश मेरे पास भी होता। कोई भी चीज अगर ऐसी देखते हैं जो हमको चाहिए थी, तो सबसे पहले अभी तक मन में यही फीलिंग आती थी कि you know, I don't, that's the feeling of lack and helplessness that comes immediately. So instead we have to feel grateful for them. मतलब everybody who wants a perfect partner, please bless all those people who have got perfect partners, या जहाँ पे आपको लगता है कि there's a lot of love and romance between two people. You have to constantly shower the blessings on them, that you know, that उनका प्यार बहुत अच्छा रहे, they really enjoy the life, they grow with each other, they have huge respect and love for each other forever, and they lead a beautiful life, they radiate that happiness to their loved ones, you know, like all of that. इतनी blessing करो कि वो law of attraction से वो चीज आपकी जिंदगी में एकदम आ जाएगी, ठीक है? Never be jealous of people who are in love and all those things. Then it says if you want to have a family, अगर आप babies देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो अपने आसपास, so be very grateful for children. फिर उसके बाद अगर ATM आपके रास्ते में आता है या बैंक आता है, be grateful for plenty of money that you have. उसके बाद जब आप घर वापस आते हो शाम को, be very grateful for your home. या फिर अगर कोई नेबर आपको कॉफी के लिए बुलाते हैं या आपको हाय बोलते हैं रोड के ऊपर ऐसे भी, so it's your magic cue to be grateful for your neighbors. ओके, सो इसके अलावा अगर आपको मटेरियल थिंग्स, हम सबको मटेरियल थिंग्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, है ना? दे मेक द लाइफ सो इजी एंड लग्जूरियस. सो अगर कोई भी मटेरियल चीज चाहिए, जैसे आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, बहुत अच्छे शूज खरीदने हैं, यू नो, इस तरह से. So if you want to buy your dream house, a motorcycle, a car, shoes, computer, laptop, so it magic you आपको लैपटॉप अपना जो करंट है या किसी और का देख के, thank you for my perfect laptop, thank you for my beautiful shoes that I have in my wardrobe, या whatever that my dream shoes that I really want to buy. अगर आपको कुछ ऐसा है तो, है ना? तो इस तरह हमको पूरे दिन भर आज जो चीज हमको कहीं पे भी नजर आएगी, उसके लिए अलर्ट होके, अवेयर होके, माइंडफुल रहना है, कॉन्शियस रहना है, so that we can pay our gratitude towards that thing, you know, directed towards that particular thing. और इस तरह से वो डिजायर हमारे पास आ जाता है. तो इसमें ये भी है कि अगर कोई गुड मॉर्निंग भी आपको बोल रहा है, ठीक है, सो इट्स योर मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटिफुल मॉर्निंग. Okay, that one. This is how it is. So इसमें है, there are unlimited and creative ways. आज यूनिवर्स आपके सामने चीजें लेके आएंगे, you know. So मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में, और ये तो रोज का ही, आई थिंक ये प्रैक्टिस हम में से बहुत सारे लोगों की का डेली अफेयर हो गया है. मतलब हमको मैजिक क्यू दिखते रहते हैं. So yesterday when I was walking in the evening and you know like हमारे अपार्टमेंट में हमारे जो सेट ऑफ कॉन्डोज है, तो उसमें एटीएम भी है, अंदर ही एटीएम है. सो उसमें वो रिफिल कर रहे थे पैसे, तो एसबीआई का एटीएम है, तो उसमें खूब सारे सायरन बज रहा था एंड वो यू नो गनमैन खड़े हुए थे बहुत सारे, एंड दे वो फिलिंग द एटीएम विद सो मच ऑफ, इतने सारे बंडल्स. तो you know, like constantly that was a magic cue for me only. So I said thank you for all the money I have, and thank you for all the money that I'll constantly be receiving in the future also, you know, because it was so much of money that I was seeing, you know, bundles and bundles रखे हुए थे और खुले, and of course like बहुत high security में थे, but you know that way. तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ, कभी आप वॉक कर रहे हो, आपको कोई दिखेगा who is not able to walk properly, you know, maybe उनके knees में कुछ issue है, so thank you for my perfect bones and muscles and my perfect health that I can walk every day. So इस तरह से मैजिक क्यू चलता ही रहेगा, because लगातार हमारी जिंदगी में मूवमेंट हो रही होती है. हो सकता है आप घर में हो, पूरे दिन बाहर ना जाओ, है ना, तो फिर आप बाहर नहीं गए तो मैजिक क्यू कैसे मिलेगा? टीवी पे कुछ आ जाएगा, न्यूज़पेपर में कोई फोटो आ जाएगी, फ्रेंड कोई फोन करके आपको बात बताएगी, तो आप घर में हो लेकिन आपकी मैजिक क्यू नॉन स्टॉप चल रही है, बिकॉज इस तरह से चीजें होती रहेंगी. आप बैल्कनी में गए, आपको कुछ दिखेगा, थैंक यू फॉर द मैजिक. वहां पे आपको किसी जो भी चीज, यू नो, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल. कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ यूट्यूब पे आप सुन रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, उसमें कुछ हो जाएगा,
तो इस तरह से मैजिक क्यू का कोई वो नहीं है कि आपको बाहर ही निकलना है घर से तभी आपको मैजिक क्यूज मिलेंगे। वो घर में भी थ्रू इवेंट्स, पीपल, सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीजें आपको दिखती रहेंगी। फोन पे बात करते करते एक बार में आपको 5 मैजिक क्यू नजर आ जाएंगे। अभी सेशन में एज आई एम सेइंग, हो सकता है मेरी बातों से आपको कुछ मैजिक क्यू मिल जाए, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले कि आपको मैजिक क्यू मिल जाए। तो इस तरह से इट इज नेवर एंडिंग एंड इट डजंट हैव अ प्लेस, इट कैन हैपन एनीवेयर। घर में वैसे ही टीवी चल रहा है, एकदम से कोई एड आएगा जिसमें बहुत ही some nice like looking figure of a girl you see, and you are trying to lose weight in any case, आपको वो नजर आएगी, thank you for my perfect body weight and my perfect figure that I have, such a chiseled figure and toned figure. So that way you will keep getting the magic cues. So it is way to be grateful. इसको हम दूसरे सेंस में, जैसे मैंने एक कोर्स किया था उसमें इसको वाव थेरेपी भी बोलते हैं. It's a wow therapy that you have to really admire something that you want in your life. So इसको थेरेपी का नाम दिया हुआ था उसमें, because it is a therapy. Therapy means treatment or healing process, है ना? So wow therapy, that is, you suppose you're trying to lose your body weight, so you pick up someone whom you really admire, could be a Hollywood star or someone, and you look at them and you admire things about them, that wow, she's got really beautiful eyes, she's got such a toned body, wow, like that way. Similarly, if you want to travel to any country, or suppose you want to go to Goa here or wherever, whatever, Pondicherry, so you take the pictures out. अब जो गोवा की इमेजेस आती है हम सबको गूगल पे मिली जाएंगी बहुत आराम से, या आपको इटली जाना है, इटली की आप पिक्चर्स निकालो, वीडियो निकालो, एंड डू दिस वाव थेरेपी. वही मैजिक क्यू है यहाँ पे. थैंक यू, लाइक फील गुड अबाउट इट, फील ग्रेटफुल अबाउट इट, बिकॉज ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो चीज आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आ जाएगी. और यूनिवर्स आज क्रिएटिवली आपके पास वो चीजें लेके आएंगे. आपको कोई बिलबोर्ड पे ऐसा कुछ नजर आ जाएगा जो आपके लिए मैसेज है, ठीक है, कहीं से कुछ भी आ जाता है. इसलिए आज मजे करो, ठीक है, मौजों में रहो, खूब ढूंढो अपने मैजिक क्यूज, जितने ढूंढो उतने ही कम है, ठीक है. बहुत मजा आता है ये वाली प्रैक्टिस करने में. और इसमें लिखा हुआ है कि आप कभी भी गलत मैजिक क्यू अट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर आपकी कहीं पे नजरें गई हैं, वो यूनिवर्स आज आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है. नॉन स्टॉप ये कम्युनिकेशन चल रहा होता है सुबह से रात तक. सो यू ऑलवेज अट्रैक्ट द एग्जैक्ट क्यूज दैट यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट मोमेंट. योर क्यूज विल नेवर बी रॉन्ग. इसलिए मत सोचना पता नहीं है मेरे लिए मैजिक क्यू है कि नहीं है, पता नहीं मेरे लिए, वो है, इसीलिए वो आपको नजर आया है. और आपको उसके लिए थैंक यू करना है, क्योंकि उससे 4 चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, ठीक है. तो ये इसका पूरा फंडा जो होता है. तो हाँ जी. Ma'am, Yeah. I would like to know, ma'am, like if we are seeing greenery in the morning, so you have a very creative mind to visualize. How do we see this? Oh, it's very easy. It does not need creativity. It is that, like suppose you're cooking something. So thank you for the great nutritious food on my table every day that I get. This is all we need to say. Even while cooking, if somebody is eating breakfast, thank you for my perfect digestion. So it is like that. So be alert and aware. That's what it's written, that today your mind will go into that direction. Okay, so Like now whatever greenery. it is, So, ma'am, and if derive we are your seeing, own gratitude out of it. ma'am, now if we are seeing greenery, that's a sign of prosperity. So, how do you relate? Thank you for the prosperity in the. I mean, that's what I said, no, in the beginning, that अगर एक कोई चीज particular है, suppose money है ना, suppose you see बहुत bundles of note रखे हुए हैं, there is some ad on the television coming जहाँ पे bundles of note रखे हुए हैं of Indian rupee. So everybody will see it in a different way. I will say thank you for all the money that I have. I can also say that thank you that I've always enjoyed prosperity in my life. Thank you, universe, for making me more and more prosperous every day. Thank you to the safety of money which is there in the bank. Isn't it? Bank is holding the money so safely and it is giving you interest on it also. Then thank you for all my, so ATM agar dekha hai, to thank you for all my debit and credit cards that I have, that gives me freedom to choose. Like it could be anything. So सब लोग अपने अपने तरीके से उस चीज को देखेंगे. Thank you.
Yeah, Thank like you. if we see a baby, so somebody would say who wants a baby will say, thank you for my family, thank you for the baby, you know. Somebody might say that thank you for the beautiful childhood that I had. Somebody might say thank you for the perfect parenting that I got from my parents who raised me to be such a nice, healthy individual and educated me. So वो That's baby right. से सबके अपने अपने क्यों निकल रहे हैं, है ना? वो object All right, same yeah. है, but everybody is viewing it in a different way. So it's an easy practice. Start doing it. It will not be. It does not need creativity. It's just that Thank your you. cue will never be wrong because your soul is searching for that. Subconscious mind will be looking for cues today. Okay, and Okay. universe is constantly talking to us. It will constantly be talking. It's just that we get lost, we forget. So यही है कि हाँ, mindfulness भी सीख रहे हैं हम साथ साथ in practices से, you know, because we perfect. generally are not mindful. We are not alert and aware. Thank you. एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली 3 दिन पहले एक टंग कैंसर का पेशेंट मुझे मिला है और वो मतलब कंपनी के ऑनर Yeah, है. can you just share it like towards the end? We'll continue with the chapter. And Okay. cue the magic. Yeah. Cue the magic has become a daily game I played, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Is not isn't it a beautiful day?" It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live, and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play cue the magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude. So you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will see where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. For number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second point, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude
cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Third point, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Priya. Thank you. So, this particular jo chapter hai, Cue the Magic, isme we have to do like 7 magic cues we have to find, but then please find 700 if you can. I mean, like the day has to be full of these things that you will keep seeing, and more you see, more will appear. You know, मतलब आप जितना ज़्यादा alert and aware रहोगे, because इसमें we are also learning to be alert and mindful. You know, because we are normally lost in our thoughts most of the time, and that is the reason for our worries and fears and all of that also. तो इसीलिए जो सारी वो बुक्स हैं अवेयरनेस के बारे में, you know, like डॉक्टर दीपक चोपड़ा बहुत बोलते हैं that you know your awareness and your current consciousness makes your life beautiful, and that is what changes things around. So alertness और consciousness हम में थोड़ी कमी रहती है, because हम या तो past में dwell कर रहे होते हैं या फिर हम फ्यूचर में होते हैं, है ना. सो लेट अस बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी अलर्ट, बी अवेयर एंड फाइंड आवर ओन मैजिक क्यूज. चीजें आती रहेंगी और ढूंढोगे तो और मजा आएगा. और फिर थैंक यू बोलने में क्या है, वो 1,00,000 बार बोल लो एक दिन में, 1,00,000 टाइम्स ऑल्सो इफ यू से, वो भी कम ही होता है ना. बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ चेंजेस. सो लेट्स डू दैट. इसमें एटलीस्ट 7 मैजिक क्यूज इन्होंने बोला है. सो एटलीस्ट तो क्या मतलब, वी शुड एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ देम. ओके, एंड सो आज की प्रैक्टिस बस यही है that सुबह count my blessings, we have to write 10 blessings, reread them, which is very important. हमें ऐसा लगता है कि लिख ली है, ग्रेटफुल तो रहते हैं, रीरीड क्यों करना, उससे क्या होगा, बट हमको पता नहीं है सेल्यूलर लेवल पे जब आप 10 लिख के रीरीड करके हर एक के बाद जब 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो, it sets the process of creation. Okay, and that 4 starts working in our life, क्योंकि 3 is the number of creation. और हम 10 के बाद 3 मतलब आप टोटल 30 times thank you out loud बोल देते हो 10 के बाद. Obviously the energy will make a difference in your entire day ahead. Okay, so that is how this practice is to be done. और आज be alert to what's around you and take at least 7 gratitude, at least है ये, ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट 7 से होगा नहीं, कुछ ज्यादा ही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंप्लेन बॉक्स भी तो होता है ना पूरे दिन, वो भी तो चलता रहता है. सो ऑब्वियसली उस कंप्लेन बॉक्स को न्यूट्रलाइज करके, उसको खाली करके उसमें इतना सारा ग्रेटिट्यूड भरना पड़ेगा. अभी तो हो सकता है उसमें 1,00,000 कंप्लेन पड़ी हुई हो कंप्लेन बॉक्स में, तो उसको एम्प्टी करके पहले 0 पे लेके आना है, फिर उसको भरना है. इसलिए बहुत जरूरी है दैट हम पूरे दिन आज सैचुरेट कर दें और ये गेम हम खेलते रहें. बड़ा मजा आएगा ये खेलने में. खेल के देखो, फिर कल एक्सपीरियंस बताना. और रात को gratitude rock, magic rock practice, where you take that rock in your hand, you just keep thinking of smallest of the things of the day. Like yesterday, you know, like इतनी छोटी छोटी चीजें जब gratitude rock की मुझे याद आ रही थी, when you really become very mindful कि ठीक है सुबह, of course सुबह से जो हुआ था वो तो मैंने किया ही था, but when I went to work, so there's a specific place I get an exclusive parking in my office. So मैं जब अपनी गाड़ी अंदर लेके जा रही थी तो किसी ने अपनी कार थोड़ी सी पीछे की तरफ पार्क कर रखी थी, बाहर गेट के बाहर. मुझे गेट के अंदर एंटर करना होता है, तो there was not enough space for my car to enter inside. तो वो एक अंकल खड़े हुए थे सरदार जी, तो मैंने उन अंकल को ये बोला, अंकल मैंने कहा थोड़ा सा आगे ले लीजिए. कहते हाँ बेटा, एंड ही इमीडिएटली, मतलब वो बस 3 इंच उनको गाड़ी आगे करनी थी, उसके लिए ही सो इजीली. मतलब इतना मैं रोड रेज और ये सब देखती हूँ, लोग कहते हैं बहुत जगह निकाल लो, और एक्चुअली जगह थी, मैं निकाल सकती थी, बट मुझे लग रहा था कहीं लग नहीं जाए उनकी गाड़ी भी और मेरी भी. सो इमीडिएटली ही सेड दैट ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में बैठे, कहते हाँ बेटा मैं भी कर देता हूँ, और उन्होंने लिटरली लाइक वो 5 इंच आगे किया, उससे मुझे स्पेस मिल गई. सो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो हम वी डोंट इवन काउंट देम एज पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट हैपेंस ड्यूरिंग द डे. Like in the evening, I really wanted to have a very nice, वो फेंटी हुई कॉफी होती है ना, जो ऐसे फेंट के जो बनाते हैं, झाग वाली कॉफी. I wanted to have that in office. बहुत मन कर रहा था कि मुझे बहुत बढ़िया वो फेंटी वाली कॉफी चाहिए, which is like nicely beaten up,
like अच्छे से उसमें सब mix हो जाए. So I wanted that coffee and then I got it and it was so yum. मतलब मुझे इतना मजा आया ना वो कॉफी पीने में, जो मग भर के दिया था कॉफी मग. So those little things, you know, that are there that we need to be grateful for. मतलब ये चीजें जो होती हैं हम मतलब बिल्कुल हमारे दिमाग में भी नहीं आती हैं. हमें लगता है अरे हम गए, लिफ्ट तो आ गई थी ना एकदम से. जैसे कल मुझे सारे ग्रीन लाइट्स मिले थे when I went to work. I left very late yesterday, 9:20 I left home and I was there in office at 9:50, which is like so quick. Why? Because I got all the green lights. So उसके लिए भी तो thank you. हर बार green light दिखती है, then I would say thank you. हर बार green light दिखी थी. The traffic was so less. Maybe because I got late, तो फिर traffic इसलिए भी कम मिलता है. So, but then yeah, these little things you have to think of. जब रात को magic rock practice करते हैं या कुछ खाने की चीज बहुत अच्छी बनी थी और आपको उसका बहुत स्वाद आया, कभी आपने फोन पे अपने फ्रेंड से किसी से बात करी and there was so much of joy and laughter in that conversation, है ना. So इस तरह की चीजें आपके magic rock practice बहुत prominent होती है. और उसके बाद of course कल wealth and success का भी किया था, शायद इसीलिए मेरे 2 magic checks realize हुए. परसों से चल रहा है ना, wealth and success, wealth and success, wealth and success. So of course day में तो not able to do it, but morning and night I'm doing it, you know, very very religiously. मतलब दिन में 3-4 बार तो नहीं हो पा रहा है, but सुबह और रात को करती हूँ because days मेरे थोड़े से वैसे चल रहे हैं. अभी थोड़ा काम है, क्रिएटिव काम चल रहा है. सो रात में 2 दिन करने से मेरे 2 मैजिक चेक्स एक सिंगल शॉट में रियलाइज हो गए. सो हो सकता है वेल्थ एंड सक्सेस वो उसकी वजह से भी हो या जो भी हो, वट एवर हाउ, में तो मुझे जाना नहीं है. आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, यू नो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इन विच एवर वे. So yeah, this is about the practice. Let's go to the other book where we are also studying about money. Yeah. So this is chapter number 9. It is about wealth, how to have more wealth and prosperity and riches into your life in terms of money, business, careers, whatever. So now the next topic is true source of wealth. Okay. So true source of wealth का है universal bank subconscious mind है. ये हमने पढ़ा था day before yesterday. उसी के बारे में है ये, that your subconscious mind is the true source of wealth. So let's read it. Anyone who wants to? I'll read. Ma'am, I'll read. The Okay. I mean, like, me too. no, I heard yeah, your name was there. okay. True source of wealth. Your subconscious mind is never short of ideas. There are within it an infinite number of ideas ready to flow into your conscious mind and appear as cash in your pocketbook in countless ways. This process will continue to go on in your mind regardless of whether the stock market goes up or down, or whether the pound sterling or dollar drops in value. Your wealth is never truly dependent on bonds, stocks, or money in the bank. These are really only symbols, necessary and useful, of course, but only symbols. The point I wish to emphasize is that if you convince your subconscious mind that wealth is yours and that it is always circulating in your life, you will always and inevitably have it, regardless of the form it takes. Yeah, so which is so beautiful and empowering idea that अगर wealth, success, अगर ये prints बन गए permanently subconscious mind में, क्योंकि हम करते हैं जैसे इसमें बताया था, by day and night my business or my sale is increasing. By day and night I am, you know, like receiving more and more money, and I always have plenty and surplus in my accounts. I always have money to do whatever I want. Okay, अगर ये वाले थॉट्स इनग्रेन हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, अब आप सैलरी डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप सेल डिपेंडेंट नहीं हो. ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये आइडियाज हैं. अब हमको पता भी नहीं है कि किस यूनिक एंड क्रिएटिव वेज में मनी हमारे पास आएगा. ठीक है, सो इट इज नॉट हार्ड वर्क दैट गिव्स अस मनी. Easy does it. This is what we had studied about a week ago. Okay, so
be in that thrill and excitement of always being abundant. ये हमको ऑब्वियसली शुरू में अगर मेंटल ब्लॉक्स हैं तो टेक्निकली करना पड़ेगा, इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला था बड़े बड़े सेंटेंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लॉक्स हैं अभी दिमाग में, और जहां पे भी पैसे की बात आती है वहां पे एडजस्टमेंट, सपोज घर खरीदना है तो वो एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन, ये वो पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएगा, इतना वहां से ले ले. नो, wealth, success, and that wealth which has got imprinted, it is a permanent affair now, and you will see the reality of it happening, whether stocks ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सैलरी कट रही है, टैक्स मिल रहा है, टैक्स कट रहा है, छुट्टियां कट रही है, आपकी इनकम पे आंच भी नहीं आएगी, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because the idea of wealth and success is ingrained, imprinted in your subconscious mind. So अब वो पैसा लगातार आप अब कहाँ से आ रहा है, हाउ में तो हमको जाना नहीं है, ठीक है. It's better not to use the brain too much. Use it only when it is required. बिना बात के हम जो दिमाग यूज करते हैं ना, उनकी वजह से हमको फियर, वरी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती है, तो इसलिए दिमाग को हम कम यूज करना अब शुरू करेंगे धीरे. मैंने भी बहुत हार्ड वे सीखा इतने सालों में, मेरा भी बहुत दिमाग चलता था पहले, क्यों, क्या, कैसे, कब, किधर, ये वो, ये कर लेते हैं, वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2. नो, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, you just have to be in that frequency of abundance which needs a muscle building. Definitely, you know, it will not come easy because लेकिन हमारे पास कितना अच्छा टूल दिया उन्होंने, wealth, success. कल और 2 चीजें वर्ड्स ऐड किए, prosperity and peace, है ना, 2 और चीजें ऐड की. So wealth, success, prosperity, peace. तो wealth and success हमने परसों वाले उसमें पढ़ा था, कल 2 पीज और ऐड हो गए, प्रोस्पेरिटी एंड पीस. तो अब हमारे पास 4 कीवर्ड्स हो गए और हमारी जिंदगी में आप ये होता हुआ देखोगे. मुझे कल ही इतना पीस दिखा है क्योंकि मैंने सुबह बहुत अच्छे से की थी प्रैक्टिस. बिफोर आई वेंट टू शावर आई एक्चुअली गॉट इनटू दैट अल्फा स्टेट आफ्टर माय वर्कआउट, दैट इज, इट वाज नॉट इवन लाइक अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इसके बाद तो आई गो वर्किंग आउट स्ट्रेट अवे. So just before the shower, I just meditated on these 4 words. Just for not for very long. I don't get so much time, but for about just 4 minutes, 5 minutes. कोई timer नहीं लगाया था, कोई alarm नहीं लगाया था. I just was deep breathing, inhale, exhale for a while, and then I was just meditating on these 4 words. You know, wealth, success, prosperity, peace. And that's all. This is what I was repeating to myself in my mind again and again and again, with just focusing on the words, nothing else. Okay, I did that. And then I just said, thank you for giving me this. I opened my eyes and I went to take a shower, got dressed and out. And in the night before going to bed, I definitely did these 4 keywords again. And yesterday, I think after long, my day was so peaceful. I did so much. I was stuck in a chapter that I'm writing. I didn't know what to write. I just spoke to my subconscious mind also that, you know, to give me the best content that I could write that can actually change, you know, our students' lives, because I'm writing a new course book for them. So it was like that. And, you know, I wrote that, I, you know, concluded that chapter yesterday, which I was stuck with for so many days. And one of the most peaceful days I have ever had in the recent past. Okay, so these things don't take time to become a reality. That is what we need to understand. दिमाग कम यूज करेंगे, ठीक है. और दूसरी चीज, we need to meditate on these words, have got an immense power in them. मतलब पूरा यूनिवर्स शेक हो जाता है जैसे आपने वेल्थ एंड सक्सेस आप एक्सयूड कर रहे हो इन, you know, from your life to the energy. When it merges from your life, it exudes, निकलती है और वो यूनिवर्स की एनर्जी से मर्ज होती है. That will start bringing about that thing without time. You know, like it's not time lags नहीं चाहिए होता, immediately action शुरू हो जाता है. So this is how powerful it is. And then I started today's session by sharing my own experience today, right? Like before we started studying Cue the Magic. So it did not take even a day. I mean, like what, day before yesterday we did, day before yesterday. और मैंने तो 3-4 बार किया भी नहीं, मैं तो बस मॉर्निंग नाइट कर रही थी. कल भी मैंने वही शावर के पहले एक बार किया था और रात को किया. That's about it. But this is how beautiful it is. And सोचो हम कितने परेशान होते हैं. तो इसीलिए
source, the real source is your subconscious. It is not your salary. It is not your business. It is not the stock market where you're engaged in. It is not your investments जो आपने LIC policy, वो policy, ये policy ले रखा है. It is not जो घर का किराया आता है आपका. वो सब नहीं है source आपके. Source subconscious है. उस पे work करो. ये सब तो टूल्स हैं. इसमें लिखा हुआ है ना कि ये सारी चीजें हैं. This process will, इसमें लिखा हुआ है that your subconscious mind is never short of, I'm like, wait, I'll just take you to that. वो जो लिखा हुआ है कि these are all little things that keeps happening. So it says that this process will continue to go on in your mind regardless of whether the stock market goes up and down. वो ऊपर नीचे जा रहा है. Sterling का वो डॉलर का रेट गिर गया. पाउंड का रेट वो हो रहा है. So your wealth or your income जो भी आपकी आ रही है is never truly dependent on bonds, stocks, money in the bank or your salary or whatever. All those things are only symbols. They are symbols, necessary and useful of course, but they are only symbol. So your किराया coming from your house, जो suppose आपने rent पे डाली हुई है कोई shop या जो भी है, या आपकी कोई income है, कहीं से पैसे आ रहे हैं या business से पैसे आ रहे हैं, वो सब symbols हैं. The real wealth is actually coming from your subconscious mind, जिसकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी. तो हमको ये जो प्रैक्टिसेस मिल रही है ना, इनको डिलीजेंटली हम करते हैं. आप देखना कि हमारे ब्लॉक्स रिमूव होंगे इससे, और फ्री फ्लो जैसे टैप खुलेगा ना, ताजा पानी आता है उसमें से, क्लियर वाटर. ठीक है, अभी वो रुक रुक के आता है खड़ खड़ करके, क्योंकि इतने सारे पत्थर बीच बीच में पाइप में अटका रखे हैं हमने, ऑफ द मेंटल ब्लॉक्स दैट वी हैव. दैट इज व्हाट वी आर क्लियरिंग राइट नाउ. और फिर पाइप्स की भी अंदर से सफाइयां हो रही हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि वर्क ऑन द सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटिंग सर्टेन थिंग्स दैट यू वांट टू सी एज योर एक्चुअल रियलिटी. Okay, and this is a science, it works, right? So this is what he's saying, that convince your subconscious mind that wealth is yours, my income is constantly increasing, I always have money to do all my courses, I have money to spend, I always give the best life to my family and children, we live a very high quality life. When this is your mindset, your subconscious believes, subconscious does not have sense of humor or whatever. अगर आप मजाक में भी कोई चीज बोलते हो ना, वो सही हो जाती है. ठीक है, इसलिए मजाक भी सोच समझ के करो. तो yesterday me and Amrita were talking. So yeah, success के फॉर्म में of course in July I'm doing my TEDx talk finally, and I've given them a date, and since it is Amrita's and we manifested it together, because when she was in Delhi she used to talk a lot about my TEDx talk. So finally given them a date yesterday in mid of July where I have to travel and do a TEDx talk. And so we were just talking, and मैं उसको बता रही थी, जो मैं आप लोगों को शायद मैंने कभी mention पहले किया नहीं है, that when we were studying all these practices, that how your subconscious and how words make a difference. So we were told very specifically that be very mindful of listening to the songs that you listen. Okay, because song के words, क्योंकि वो emotions and high vibration होते हैं ना, जैसे हम सबको कभी खाली होते हैं तो song जैसे बहुत मजेदार धड़ाकेदार song चलता है, वैसे ही हमारे हाथ पैर हिलने लगे. We feel like dancing, and dancing is so much fun when the songs are really nice. when the music is amazing, बैठे बैठे भी we are moving and shaking. So इतना high power and high vibration and emotion होते हैं. तो हमको strictly बोला था कि कोई दुखी गाने या जिस चीज में दिल टूट गया, दिल के अरमांसुओं में बह गए, इस तरह के सॉन्ग से रिफ्रेन करें, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट हो जाएंगे. तो इसलिए हमको स्पेशली कहा था that the songs you need to listen is लव यू जिंदगी, and things like Dhoom Machale, which I had sung. I mean, like we had done meditation on that once when I was in Hyderabad. तो मैंने आप लोग को जो meditation कराया था, वो धूम मचाले पे कराया था, remember? Or anything which is like, that your life is full of happiness and love and success. Songs, words definitely penetrate into your subconscious mind. So be very, very mindful of it. So this is what I wanted to tell you. So मैं अमृता को ये बता रही थी कि I have not told anyone so far, but we were very, very, so my playlist is very selective. Like उसमें सारे words ऐसे like happiness and love and, like all of that. So so there's a group called Taninga and Too Bad. So you can, उनके सारे travel songs होते हैं या मस्ती वाले होते हैं.
So, like that's like a US based group. So उनके सारे मजेदार से songs होते हैं. So of course you know that what you have to listen to. We all know what words we want to have seen in your reality. So उस तरह के songs सुनने हैं because songs बहुत जल्दी किस्मत बदलते हैं. Yeah, so be mindful of what you're listening to. No dukhi songs, Dil Toot Gaya and all of that. No, I mean you will see that happening in your life very soon. Otherwise, so yeah. Hanji, please continue. Yeah. Trying to make ends meet and the real cause. There are people who claim that they are always trying to make ends meet. They seem to have a great struggle to meet in their obligations. Have you listened to their conversation? In many instances, their conversation runs along this vein. They are constantly condemning those who have succeeded in life and who have raised their heads above the crowd. Perhaps they are saying, "Oh, that fellow has a racket. He is ruthless. He is a crook." This is why they lack. They are condemning the thing they desire and want. The reason they speak critically of their more prosperous associates is because they are envious and covetous of others' prosperity. The quickest way to cause wealth to take wings and fly away is to criticize and condemn others who have more wealth than you. Yeah, this is what happened. So yesterday I was reading a book, like a chapter of a book, उसमें ये लिखा हुआ था, jealousy is your basic desire. And I got hooked on to that line. If we are condemning someone or if we are jealous about something that someone has, that basically is because we don't have that in our life. Okay, so your basic desire, anything that you're jealous of in someone or envious about something that they have, that's because वो आपका खुद का desire है, आपकी बहुत strong चाहत है वो. अगर हम पैसे के लिए किसी को बोल रहे हैं कि ओ उसका 2 नंबर का पैसा है, उसके पास बहुत like whatever, like that person is a crook, उसके गलत और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, वो लोगों को लूट लूट के अपने अपने पैसे भरता जा रहा है, बैंक अकाउंट भरता जा रहा है, या वो बहुत रूथलेस है, like इस तरह से, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा है और हम में जेलसी बैंग्स आ रहे हैं उसके लिए. सो पैसा अगर हम चाहेंगे भी तो वो हमसे दूर जाता जाएगा. तो इसीलिए कभी ऑलवेज इंजॉय देयर सक्सेस. हाउ डज इट मैटर? लाइक उसके पास पैसा है, उसको ब्लेस करो. अगर आपको लग रहा है कि वो झूठ बोलता है और आपके पास एविडेंस है कि वो ऐसे कर रहा है, उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालो ना, ऑफ हैप्पीनेस एंड विजडम. अगर विजडम नहीं है, सपोज नहीं हो रहा है, तो हैप्पीनेस एंड विजडम की मैजिक डस्ट डाल देंगे. हम तो ब्लेस कर सकते हैं ना. हमको जेलस होने की, तभी मैंने वाव थेरेपी बताई थी. दैट नेम, यू हैव टू गेट हुक टू दैट नेम. इट्स अ वाव थेरेपी. So it is healing us. It is changing our mindset. And you have to say, wow, amazing. This is so good. And that has to be a constant process. ठीक है, तो इसमें बस यही बताया हुआ है that never be jealous of anyone who has more money than you. किसी के पास भी अगर आपके पास से ज्यादा पैसे हैं या वो सारी चीजें उनके पास आती जा रही हैं, चाहे वो आपकी सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ हैं घर में और आपके पेरेंट्स इन लॉ ने किसी एक पर्सन को ज्यादा प्रॉपर्टी दी है और आपको कम दी है, ठीक है, आपके लिए 50 प्रॉपर्टी आज खरीदना एक सागर की बूंद के बराबर भी नहीं है. ठीक है, इस माइंडसेट के साथ जिंदगी जियो. वो तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है जो शायद आपके भाई या आपकी बहन को दिए है उन्होंने और आपको नहीं दिया है, या आपको सबसे छोटा वाला दिया है, या आपको ऐसी फ्लोर दी है जो आपको नहीं चाहिए थी. You can accumulate wealth so much in abundance that आप उन लोगों को बहुत आराम से, लाइक आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो वापस एक, like buy a nice fresh house and put it in your parents' name. That is the kind of abundance that we can accrue by doing these practices, because nothing is outside. वो जो 4 घर उनके पास थे या 2 घर उनके पास थे जो उन्होंने किसी और को दिए, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है. आप उससे 10 गुना ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो वेल्थ अपना माइंडसेट चेंज करके, यानी कि सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करके.
एंड दैट अबंडेंट और वेल्थ सक्सेस माइंडसेट अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है, you will see that how amazingly it will happen in the reality of life. ओके सो इसलिए मत सोचो कि मुझे तो दिया नहीं, मुझे इतना कम दिया, उनको बड़ा घर दे दिया, मुझे छोटा दिया, ये फ्लोर मुझे नहीं चाहिए थी, मेरे इतने बच्चे हैं तो मुझे इतना मिलना चाहिए था, उनके कम है, या ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ऑल फॉल्टी माइंडसेट्स. इससे आपकी हेल्थ भी रॉब होगी, इससे आपका पैसा भी रॉब होता जाएगा, and there will be further more problems in life. Okay, because it is all about what you are feeding to your subconscious mind. So put good seeds into the subconscious mind, तभी तो वो पेड़ बनेंगे एक, फिर वो पूरा उस चीज का ही जंगल बनता है. ठीक है, तो वो सीड है, ध्यान से डालो सबकॉन्शियस माइंड में. वैसे हम लोग मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुबह सुबह उठते ही वी आर ऑल्सो डूइंग द अदर प्रैक्टिस ऑफ काउंट माई ब्लेसिंग्स. तो अल्फा स्टेट में जनरली हम थैंक यू मोड में होते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं ना, योर डोमिनेंट इमोशन रूल्स एंड गिव्स वे. सो हो सकता है डोमिनेंट इमोशन हमारा ये है दैट मुझे अपनी डील राइट नहीं मिली, लाइक यू नो, लाइक आई डिड नॉट गेट अ गुड डील आउट ऑफ दिस, वो जो भी किसी भी चीज के लिए, सैलरी को लेके हो सकता है कि मुझे कम मिला, यू नो, किसी भी चीज को हो सकता है कि मुझे अब उस हिसाब से नहीं मिला जैसे मैं डिजर्व करती हूँ, आई एम डिजर्विंग ऑफ मोर. अरे तो आप लिखना शुरू करो, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग. नहीं वर्दी हो तभी तो नहीं मिल रहा है ना. अभी वर्दी बनाओ, बार बार अपने आप को बोलो, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव, अप्रिसिएशन, मनी, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड प्रेजेस. आई एम वर्दी. वर्थ अपनी इंक्रीज करनी होती है, जैसे ही अपनी कैपेसिटी इंक्रीज होगी वैसे ही और आएगा. अभी तो अब ऑब्वियसली एक इतनी सी कटोरी लेके बैठे हुए, तो उसमें अबंडेंस कैसे आएगी? यूनिवर्स इज रेडी टू गिव, बट आपका वेसल इतना छोटा है. ठीक है, अपना वेसल बड़ा करो ना, मतलब माइंडसेट चेंज करो. लाइक that, even that's for me also, I'm not advising you or anything, I'm not like that, I'm also learning. ठीक है, so that's for me also. मेरा भी वेसल बहुत छोटा था, जब मैंने थोड़ा अपना वेसल बड़ा किया उसके बाद ज्यादा आने लगा. सो यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू पूरा सागर, पूरा ओशन, बट अब वेसल ही वो एक चम्मच लेके बैठे हुए तो अभी उतना ही मिलेगा ना. तो उस चम्मच को थोड़ा बड़ी कटोरी बनाओ, फिर उसको बड़ा सूप बोल बनाओ, फिर उसको बड़ा बोल बनाओ, फिर बहुत बड़ा वेसल बनाओ, इतना बड़ा बना लो दैट पूरा की पूरा ओशन उसमें आ जाए. Isn't it? So इसलिए वर्क ऑन योर वेसल, इसीलिए कहते हैं ना वर्क ऑन योर सेल्फ. देयर इज नो नीड टू वर्क आउटसाइड. अपनी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, अपना माइंडसेट, अपना ऑटो सजेशन यानी कि अपनी सेल्फ टॉक, ठीक है, इस पे वर्क करना जरूरी है. तो हम अब अपनी जिंदगी अपने ऊपर लगाएंगे. क्या बाहर हो रहा है, मॉम इन लॉ, दिस दैट, इट इज इममटीरियल. ओके, बिकॉज आपको अपने वेसल जितनी ही चीजें मिल रही हैं, ज्यादा चाहिए तो अपना अपना वेसल बढ़ा लो. यू नो, इट इज दैट. So everything comes back to how much worth of the thing that you have, you will get accordingly, है ना. So let us increase our worth also by constantly doing these practices जो हमने सीखी. आज का दूसरा चैप्टर एंड ये वाला चैप्टर, इसमें लगातार बातें कर रहे हैं. पहले इन्होंने बताया कि कैसे वेल्थ लेते हैं, है ना, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस चैप्टर में बताया कैसे वेल्थ एंड सक्सेस आपकी जिंदगी में आएगी. आप वो बता रहे हैं, ठीक है वो तो आएगी, लेकिन आपको ये चीजें नहीं करनी है. ठीक है, तो आज वाला जो बताया उन्होंने, ये नहीं करना है. पहले उन्होंने अच्छे से समझाया कि देखो कोविड आ रहा है, बंद हो रहा है, वो हो रहा है, आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका अबंडेंट माइंडसेट है. आप अपना सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस आपका नॉन स्टॉप चल रहा है आपके दिमाग में. ठीक है, तो आपका वेसल और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है और कॉन्स्टेंटली होता जा रहा है. अब बंद हो रहा है, सैलरी आ रही है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेल ऊपर जा रही है, बिजनेस की नीचे जा रही है, क्लाइंट ने पैसे दिए, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, बोनस कितना मिला, इससे आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज आपका बहुत सेट है वेल्थ, सक्सेस. अब वो रिपीटेशन के कारण अल्फा स्टेट में वो परमानेंट टैटू बन गया है सबकॉन्शियस माइंड में. अब आप मस्त रहो. ठीक है, कुछ और देखने की, सुनने की, सोचने की जरूरत ही नहीं. आप अपना काम करो, बार बार ये रिपीट करो, इनको इनग्रेन करो, आपका अपने आप वेसल बड़ा होता जाएगा एंड यू विल सी दैट योर इनकम स्टेडीली विल इंक्रीज एंड इट विल स्काई रॉकेट. ठीक है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज practices that we do. Forget about everyone else.
ठीक है, कल भी हम यही पढ़ेंगे कि क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है वेल्थ का। आज हमने पढ़ा हेट्रेड, जेलसी, एनवी, है ना, ये सोचना लोगों के बारे में। कोई उनके पास किसी ने जैगुआर खरीद ली तो आप बोलोगे अरे उनके पास वैसे ही 2 नंबर का पैसा है, ऐसे ही खरीद लेते हैं, या उनको तो गिफ्ट करी है। या किसी के लिए हम बोलते हैं अरे वो दहेज में लेके आए हैं, उसकी खुद की थोड़ी है, उसको दहेज में मिला है। तो अच्छा नहीं, वो कैसे हॉलीडे ट्रिप पे गए, कहाँ पे, नहीं नहीं उसके इन लॉज ने दिए हैं पैसे, वो बहुत पैसे वाली, उसने बहुत पैसे वाली लड़की से देख के शादी की थी। क्योंकि हम इस तरह की बातें करते हैं फालतू की, है ना, इस तरह के। वी एक्चुअली वे पीपल ऑन द crores they have put into the wedding ceremony, कि पता है बहुत अच्छी शादी थी, 10 करोड़ की शादी थी, इतने करोड़ की शादी थी। तो हम भी तो मैड है ना शुरू से। अब इस तरह से चीजें हम करते आ रहे हैं, अब वो सारी हमारी जो खुशियां रॉब हो गई ना उन सब चीजों की वजह से। हाउ डज इट मैटर, शादी इज अ शादी। अब ठीक है 10 करोड़ की बहुत पैसे वाली पार्टी है, बहुत ये है वो है, उसने लड़की से पैसा देख के शादी की, you know, all those things is none of our business. Okay, and it should never be a business. Work on yourself. Okay, we are learning, I am also learning this because I have also been doing all of that earlier. Before I came into these sessions, I would say that of course you can appreciate, wow कितनी luxurious wedding थी, कितना अच्छा था, you know, उसकी dress कितनी अच्छी थी bride की, खाना कितना tasty था, सारे multiple cuisines थे, you know, it was such nice arrangement, बहुत ही बढ़िया, और हर जगह बड़े बड़े screen लगे हुए थे। wow factor डालो instead of discussing in a negative connotation कि देख के लड़की शादी की है, उन लोगों का ऐसा है वो है। all those things are unnecessary. Okay, so the moment jealousy comes, it means that you are insecure. Okay, and insecurity is a way below the line feeling. तो जो है वो भी हमारा चला जाएगा। तो इसीलिए अपने वेसल पे वर्क करो बस। कुछ भी बाहर कोई कुछ ऐसे देखने की जरूरत नहीं। नो कमेंटिंग ऑन एनीवन, नो क्रिटिसाइजिंग, नो गेटिंग एनवियस अबाउट एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, बल्कि तो बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है, बस थैंक यू फॉर माय परफेक्ट। उसमें भी यही सिखाया हमको रोंडा बर्न ने कि बहुत अच्छी किसी ने ड्रेस पहन रखी है तो उसमें भी हमको ये बोलना है, थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल वार्डरोब एंड ऑल द ब्यूटीफुल क्लोथ्स आई हैव इन माय वार्डरोब। किसी के अच्छे जूते किसी ने पहने हुए हैं, आपको शूज देख के मजा आ गया कि वाह क्या शूज हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल शूज दैट आई हैव इन माय शू क्लोजेट। ओके, तो उसमें भी हम अपने पे ही वर्क कर रहे हैं, isn't it? So this is what has been taught to us, that we are the center of the universe and you can create an abundant life. जिन जिन लोगों को लगता है कि parents have given them a raw deal by not giving them a lot of property or something or the other, or they've given more to anyone, please come to that moment point where you pick up a house after having bought 2 houses for yourself. You pick up a house and you gift it to them. You know, this is the kind of wealth we can accrue into our life by training the subconscious mind. Okay, so yeah, we are done for today. Thank you so much for reading. Thank you. Ma'am, I want to thank you to all of you who appreciated my poem. Yeah, you're becoming more and more Thank creative you, every ma'am. day. This is so amazing. नहीं Very मैम, nice. ऋतु तो इतनी स्टनिंग, इतनी मींस ब्यूटीफुल लग रही थी मैम, वो डांस कर रही थी, so I couldn't resist to write a poem on her. Oh, I'm yet to see Ritu's videos. I will see them today. I had like, yeah, slept well. They are Please, brilliant. really. Brilliant. That's amazing. Very nice Dancing in a videos. hospital. I think it was some hospital dress because I saw some. Yeah, Yeah, yeah. Yeah. So that's like really amazing. I'm going to see them I right was away. just wondering what the doctors and the nurses must be thinking. What are they? उनका भी मन कर रहा होगा वो Yeah, बेचारे, वो हाँ दुखी पेशेंट को लग रहा होगा ये कैसा आउट ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट आ गया है हमारे पास। Yes. और हम लोग अपना और ड्रीम कर लिए कि हम लोग जाएंगे तो even we will do like this unnecessarily. हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। हम जाएंगे हम ही नहीं। स्विट्जरलैंड जाएंगे, बस वो एक बार हम थॉट आ ऋतु गया को मैम। भी स्विट्जरलैंड ही लेके जाएंगे, हम उसको यहाँ क्यों छोड़ेंगे। With this attitude, Ritu has, you know, like a beautiful journey ahead in life. That's very, very clear. I mean, अगर ये mindset है उसका, जिस तरह से she's fighting this easy battle, ठीक है? So this will actually give her a lot more in her life.
Yeah, मैम so she जो has a भी beautiful life पेशेंट्स ने, forward. That's very clear. यस मैम, एंड जो भी पेशेंट्स ने उनको देखा होगा ना, वो भी सोच रहे होंगे हम भी ऐसे ही करें तो हम जल्दी, Seriously. एक्चुअली उसका इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ, और जो भी हाँ. उसने अचीव किया ना मैम, इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स आल्सो। हाँ, और 2 दिन में मतलब ऐसी सर्जरी में बिल्कुल ठीक हो जाना, मतलब 2 दिन में कोई ठीक होके चौथे दिन आप घर भी आ रहे हो, यू नो, लाइक इट्स एक्चुअली, मतलब ये तो छोटे छोटे सर्जरीज में भी 2 दिन में रिकवरी मतलब इतनी आराम से नहीं होती। हर्स इज सो इजी एंड इट इज गोइंग टू बी इवन इजियर नाउ, लाइक यू नो, सो दैट्स ब्यूटीफुल। चलो मैम then या मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी जैसे मेरे बहुत क्लोज हैं, मैं जानती हूँ उनको, मतलब उनके घर में जैसा बता ना रेनू, ग्रेटिट्यूड कैमरा ऑन करके बात करो, मुझे लगता है मैं दीवार से बात कर रही हूँ, नहीं तो। अच्छा एक सेकंड मैम, एक सेकंड। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मैं कह रही हूँ कि जैसे मेरे क्लोज रिलेटिव है, मैं जानती हूँ उनको, जैसे इन एंड आउट आप जानते हो ना कि उनका क्या रूटीन है, क्या लाइफ स्टाइल है। मैम मतलब मैं देख रही हूँ, मतलब डे बाय डे दे आर मतलब प्रॉस्पेरस, इतना उनका ग्रोथ हो रहा है बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, हर चीज में, और कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। और मतलब जो उनके घर के लोगों को भी मैं जानती हूँ, आई कांट नेम देम, तो मतलब हमेशा इधर उधर की बातें करना लोगों के लिए। अगर कोई कुछ गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है, खुद के पास इतना होने के बाद भी जेलस फील, जेलस फैक्टर होना कि यार उसकी बड़ी अच्छी हो रही है वो, मतलब। तो मैम क्या रीजन है ये कि हमें आपके क्या लिए करना, आपकी लाइफ? हमें क्या करना, अगर वो प्रॉस्पेरस बहुत अच्छा है, भला हो उनको आज 10 करोड़ मिल रहे हैं, उनको 25 करोड़ और मिले, हमें क्या करना। हमें नहीं अपने जैसे आप पे वर्क करना है, और नहीं हमें नहीं क्या मैम, पता आई है मीन कि टू वो जाके अपने बिजनेस में सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मी जी की फोटो लगाई हुई है, जो उनका गला होता है ना जहाँ पे पैसे रखते हैं। हो सकता है कि उनका जो कैश बॉक्स है उस पे वो रोज जाके स्वास्तिक बनाते हैं, अपने कैश बॉक्स को थैंक यू बोलते हैं, वहां उन्होंने लक्ष्मी जी की फोटो लगाई है, रोज सुबह जाके घंटी बजा के आरती करते हैं और वेल्थ की प्रेस करते हैं, उनका अबंडेंट माइंडसेट है। दैट्स व्हाट मैटर्स, नो। He must be doing all that. No, we are not doing all this. हम कैश बॉक्स की कितनी बार पूजा की है, हम किए ही नहीं है कभी। शायद लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं कभी, तो एक मतलब चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं हम दिवाली पे, और तब बनाते हैं स्वस्तिक वहां पे। सो हमें क्या पता कि वो कितना ज्यादा रेवरेंस के साथ पैसे को डील करते हैं, उनका पैसे के साथ रिश्ता कितना ब्यूटीफुल है, तभी ना उनके पास ज्यादा आ रहा है। रोज कैश बॉक्स की पूजा होती होगी उनके बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट में, आप जरूर मालूम करना ये वाली चीज। तो ये इतना ज्यादा उनका जो रेवरेंस, द रिस्पेक्ट, द लव दैट दे हैव फॉर मनी, इतना पूजा पाठ जो लक्ष्मी जी की या जो भी मतलब होती है, रोज जाके उस पे लाइक ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ के वो सारा कैश बॉक्स के साथ करना। आई हैव सीन बिजनेसमैन डूइंग इट, no matter what they do outside, but the rishta that they have with money is really beautiful. So anyhow, what others are doing should be none of our business. That is what we have studied today. So really doesn't matter. और कोई भी चीज अगर हमारे सामने आ रही होती है ना, वो हमारी लाइफ में कहीं पॉलिशिंग के लिए आती है। इट्स अ स्क्रबर। Okay, so maybe identify that what you need to scrub in your life. Maybe there is that factor of little bit of maybe 1% jealousy, but that we may not know. We may all have it. We all have that angst against मैम, बट people. स्टिल आई हैव सीन दे आर नॉट हैप्पी, रिलेशंस आर नॉट हैप्पी, दे आर Well, नॉट that's what it happy, says. तभी तो वो टोनी being so रॉबिन्स much बोलते हैं ना wealthy. कि आपका बहुत बड़ा मैंशन है, आपके घर में जकूजी है, आपके घर में पूल है, आपके घर में पूल साइड पे बहुत अच्छी बार है, आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत है, लेकिन उस घर में अगर कोई आता ही नहीं है, और आपके अच्छी सेहत नहीं है, मतलब हेल्थ इज नॉट गुड, Right, ma'am. लॉट ऑफ टेंशन, Right. पूरी पूरी रातों को नींद नहीं आती है, तो उस तरह की जिंदगी का क्या फायदा, है ना। तो हम तो सारे एरियाज को कवर करते हैं ना, लाइक व्हेन वी डू ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ दैट। सो एनी हाउ, गॉड ब्लेस देम सो दैट दे गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप उनको ब्लेस करो कि उनकी जिंदगी में, उनके घर में खुशियों की बारिश हो जाए, है ना। मैं तो ब्लेस करती हूँ, being so close to them, I तो bless them. And मैं छोटी सी शेयरिंग, अभी लाइट चली गई थी हमारे घर में, तो जैसे वाईफाई बिल्कुल बंद हुआ, तो 1 सेकंड के लिए भी मैम, जैसे आप क्लास आपकी चल रही है, 1 सेकंड के लिए भी ग्लिच नहीं आया, मतलब एकदम वाईफाई गया अपने आप ही, मोबाइल डाटा से ये हो गया। अदरवाइज बीच में ग्लिच आता है तो आपको फिर से रिजॉइन करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं हुआ। आई वाज सो सरप्राइज कि बिल्कुल नॉन स्टॉप मैम आप बोल रहे थे, और कंटिन्यूअसली लगा ही नहीं कि लाइट बीच में गई है। तो ऐसे ही होता मैं है। इलेक्ट्रिसिटी को भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ डेली। Yes, that's a magic cue.
Firstly, thank you to the phone, thank you to the mobile data, and thank you to electricity. And ma'am, thank you to you Yeah, for thank changing you. our life. Thank you so much. Guys, I can see Priya, your hand is raised, but I've got to go today. Okay, so maybe tomorrow. Yeah, it's Tomorrow or yeah. yeah. Thank Or you you. want to do a quick sharing? फटाफट बोल दो. एक ना पेशेंट मिला मुझे 3 दिन पहले, मदर वो टंग का उसको कैंसर है, तो मेरे को जो चीजें समझ में आई वो मैंने उसको ना ऐसे ही गाइड किया। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही मुझे ऐसे डॉक्टर्स मिले हैं जो कि प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और मतलब बहुत सारे अबंडेंस चीजें। लाइक मैं सोच रही थी कि कैसे इसको ना 100% मैं क्योर कर दूं। वो एम्स में ट्रीटमेंट, उसका एक सर्जरी ऑलरेडी हो चुका है और उसका सेकेंड सर्जरी वो ना लेडी हार्डिंग से उसने अपना वो करवा लिया था, बायोप्सी होता है, तो वो गलत हो गया था, तो इस वजह से एम्स वालों ने बोला कि सेकंड सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी। तो उसके पास 30 डेज का टाइम है। देन आई एम सेइंग हिम कि आपको अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के थ्रू ना आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं गाइड कर रही हूँ वैसे वैसे आप करना शुरू करो। तो अब देखते हैं, लेट्स सी। और मेरे को ना बहुत सारे लोग परसों ही मिले हैं, मतलब उसके जिस दिन मैं उससे मिली हूँ उसके एक दिन बाद। तो लेट्स सी, लाइक वी कैन प्रे फॉर दिस कि ये सब चीजें ठीक हो जाए, उसका सब कुछ ठीक हो जाए। उसका टंग का कैंसर, और उसकी वाइफ को भी कैंसर था, तो उसने शेयर किया कि उसको कीमोथेरेपी उसने अपनी वाइफ को कराई थी, तो उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो ही डोंट वांट टू गो फॉर कीमोथेरेपी। तो मैंने भी उसे बोला कि भाई आप कीमोथेरेपी के लिए मत जाओ, क्योंकि मेरा खुद का कजन कीमोथेरेपी से एक्सपायर हो चुका है। और मैं अपने कजन को बहुत समझाती थी बट वो मानता नहीं था कुछ भी ना। बस यही मेरी शेयरिंग है आज की, स्मॉल सी। और बाकी फिर कभी करेंगे। थैंक यू। All right. Thank you for sharing. But like pray for the right treatment. Chemotherapy has saved many lives also. It's not that it's bad. I mean, like, but there are people I've seen who've taken chemotherapy. उनका एक भी बाल नहीं झड़ा, उनके बाल पहले से भी ज्यादा थिक हो गए थे while taking chemotherapy, all that while, और कोई symptom नहीं, leading a normal life and like going around by the day, doing all the chores of the house. Yeah, so it is all about the mindset. So yes, keep encouraging that couple and share our sessions with them. If they are there on the YouTube, please share the links. Maybe they really need, they're seeking that kind of support and help. And the biggest support and help you can He is receive is the from owner yourself. of one company, and he is doing very good in his business. He is having multiple companies also, but I have to check his time slot, whether he is available or not. Like they people are keep busy themselves in their business also ना, like traveling or something. तो देखते हैं मैम, जैसे अगर कोशिश करती हूँ कि यहाँ Increase your vessel size. When you really want to help someone, there's always a way out, है ना? हो जाएगा, ठीक है? चलो, thank you Priya, bye everybody, have a beautiful Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. I miss